as well as the ministry पे ही हंस रहे हैं that what sort of circular has been issued, circular number 12 2022 on 16th of June 2022. But friends, it has become a tendency of our government to come out with this type of section every year. You take the illustration of the year 2020, it was 206C1H TCS on the sale of goods. Last year, it was 194Q, which was TDS on the purchase of the goods. And this year, 194R, that is TDS on the benefit or perquisite arising in the case of business and profession. I would first take myself to the section proper as well as the memorandum, and thereafter we will be interpreting the nitty-gritty of the circular. I would try to cover as many issues as possible from my side, but if something is remaining, definitely I would be happy answering the same at the end of the session. Let us start with Memorandum explaining the Finance Bill 2022, which was being proposed on 1st February 2022, which says that as per clause number 20, or rather as per clause 4 of section 28, subclause 4 of the Income Tax Act, the value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not. I'm repeating the word, whether convertible into money or not. See, reading the bare provision of the or verbatim of the law, verbatim of the charging section under the head business and profession, the reason for bringing this section and reason for coming out with the circular will make majority fundamental clear. Section 28(4) says the value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or exercise of profession. This word exercise of profession was not there few years back, which was inserted in the legislature maybe around 3 or 4 years back. Business or exercise of profession is to be charged as business or profession income in the hands of recipient of such benefit or perquisite. Meaning thereby, simple language में समझे तो मुझे कोई मेरा क्लाइंट, उनका कोई इनकम टैक्स का केस मैंने ई असेसमेंट में, फेसलेस असेसमेंट में अच्छे से हैंडल किया, उसकी 1 लाख रुपए की फी दी, प्लस उन्होंने मुझे 25,000 रुपए का एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया, तो दैट 25,000 रुपए मोबाइल फोन which I have received from my client would be chargeable to me under the head business and profession. However, in many cases, such recipient does not report the receipt or benefit in their own return of income. This is Memorandum explaining the finance bill. They don't report it in their return. ये 25,000 का मोबाइल मुझे मिला, मैंने मेरी डॉटर को दे दिया. I'm using it for personal purpose. I'm not claiming the depreciation on the same. मैंने कहीं पे भी इसकी बुक में एंट्री नहीं की. क्लाइंट ने मेरे ये 25,000 रुपए का खर्चा अलावेबल एक्सपेंडिचर मांगा. मैं नहीं बताता हूं कि मुझे मिला, मैं नहीं बताता हूं कि ये मैंने रिसीव किया है. I was not showing. Many cases people were not showing this as their income in their return, leading to under-reporting of income or inaccurate reporting of income, whereby the tax thereon is not determined and not paid. And to overcome the same, it has been provided to my client who gave me this particular mobile that, Mr. Client, while giving this mobile phone to Palak Pavagadi, the chartered accountant, you make 194R of the Income Tax Act. If you make 194R of the Income Tax Act, then Mr. Palak has to show this as his taxable income. So, friends, the concept is to make the receiver liable to show this in their return. This particular provision has been incorporated in the law, has been enacted in the law. Friends, it has also been provided in 194R that section 194R goes this way. Any person responsible for paying to a resident, I repeat,
Any person responsible for any person. Word important is any person. Thereafter, the word important is responsible for providing to a resident any benefit or perquisite, whether convertible into money or not. वहां से ही वर्ड उठाए हुए, whether convertible into money or not, arising from business or the exercise of the profession by such resident shall before providing. I repeat, before providing. The words important are any person. It is to resident. The third important word is whether convertible into money or not. Fourth important is arising from business or exercise of the profession shall before providing such benefit or perquisite as the case may be to such resident ensure that the tax has been deducted at source. Tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10% of the value or aggregate value of such benefit or perquisite. This section is applicable from 1st July 2022. I must congratulate Chartered Accountant Association as well as the committee and office bearers to keep this seminar at a perfect time, because this is the first month wherein the TDS need to be deposited up to 7th of August. And it is a very appropriate time to keep this type of this particular seminar. This section is applicable with effect from 1st July 2022. Now, if we try to analyze the section, इसको डिसेक्शन करने की ट्राई करें, तो who is responsible for deduction? Any person responsible for providing benefit or perquisite to a resident shall be responsible for deduction of tax. Let me take you to the last column now. Person exempted में चले तो वहां पे लिखा है these provisions are not applicable to a person being an individual or HUF whose total sales, gross receipt or turnover does not exceed 1 crore in the case of business or 50 lakh in the case of profession during the financial year immediately preceding the financial year in which benefit or perquisite is provided. This is just like 194J or 194C or any other provision of the TDS कि अगर individual HUF छोटे individual HUF है, छोटे individual HUF का मतलब है जिनका टर्नओवर करोड़ से ऊपर नहीं है बिजनेस में या ग्रॉस रिसीट 50 से ऊपर नहीं है प्रोफेशन में, in the immediate preceding previous year they are not required to make the TDS under section 194R. Now, second important point is who should be the deductee. The deductee should be resident person. That means जिसको benefit दिया है वो person resident person होना चाहिए. तीसरा, कब general rule TDS का है at the time of payment or credit whichever is earlier. Here the rule is before providing the benefit or perquisite. We will be analyzing what is meant by before providing benefit or perquisite. But एक बार मैं अभी pitch पे settle होने की try कर रहा हूँ, आपको settle करने की try कर रहा हूँ, referring at the bare verbatim of the legislature 28(4) and section 194R. TDS is to be made at the rate of 10%. Aggregate value of the benefit or perquisite exceeding rupees 20,000 during the financial year, the TDS is required to be made. Receipt कौन सी अमाउंट के ऊपर, कौन से बेनिफिट के ऊपर TDS करना है? बेनिफिट और perquisite whether convertible into money or not, arising from business or exercise of the profession, this TDS is required to be made. Otherwise, TDS is not required to be made. Now, see, ये जो 28(4) है बरसों से है. 28(4) में मैं ये मोबाइल मेरी डॉटर को जो मैंने दे दिया, क्लाइंट ने मुझे दिया, मैं बताता ही नहीं. अब क्लाइंट ने तो किसका खर्चा अलावेबल मांगा? मोबाइल लिया, उसका खर्चा अलावेबल मांगा बिजनेस प्रमोशन करके या XYZ एक्सपेंडिचर कर. मैं ही ऑडिटर हूं, मैं ही समझाऊंगा भाई तू क्यों बता रहा है मुझे कि तूने मुझे दिया? तू बता दे कि तूने XYZ को दिया. You get the expenditure deductible as sales promotion, and client was doing the same, and client was claiming the expenditure deductible. To overcome, government says that they have come out with 194. I repeat the word, says that they have come out with 194R. Now listen, as there were number of complexities, हमारे काफी I would say budget meetings वगैरह हुई, उसमें भी ये इतने सारे प्रोविजंस होते हैं ना कि ये एक सेक्शन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. दिस इज टू बी डेल्ट ओनली व्हेन द सेक्शन इज गोइंग टू बी मेड इफेक्टिव. CBDT came out with the guideline, as I have said, by way of circular number 12 2022 dated 16 June 2022.
and this is as per the powers conferred to CBDT under section 194(2). It provides that CBDT with the previous approval of central government may issue guidelines for the purpose of reviewing difficulty which are arising in the giving effect of 194R. Further, 194R(3) provides that such guidelines should be laid before each house of parliament and shall be binding on income tax authority as well as on the person providing such benefit or perquisite. So ये CBDT circular लेके आए. Let us begin with the nitty-gritty of the circular. I am bound to cover each and every question in the circular plus certain additional aspect, and plus obviously मुझे पता है कि यहाँ पे जो August gathering है, that August gathering is here for finding out is there any loopholes available. We will be going to that same illustration which I have given, that mobile phone which I have given to my daughter 25,000. What should be done for the same? I would be analyzing, but let me first go to the slides and let me first go to the circular. Whether benefit or perquisite provided between 1st April 22 to 30th June 2022, that is a current year wherein this particular section was not applicable, would be subjected to 194R? Answer is no. It is not subjected to 194R. Let us put it this way कि आपने 30th जून तक जो भी बेनिफिट प्रोवाइड किए हैं उसके ऊपर TDS करने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, सर्कुलर मेक्स इट क्लियर, which was also made clear under 194Q last year or 206C1H earlier year, that for the purpose of finding out this aggregate limit of 20,000, you have to include the benefit provided prior to the applicability date. That is from 1st April 22 to 31st March 23, this 20,000 limit is to be seen. Any benefit perquisite provided prior to 30th June 22 would not be subjected to TDS, but that benefit perquisite provided should be calculated, should be included in the limit of 20,000. Like, friends, the first one. If the benefit or perquisite is provided between April to June, look at the table, 18,000 रुपए का benefit perquisite provide किया है, and post July or thereafter 20,000 का benefit provide किया है. This TDS is required to be made on the value exceeding 20,000. अब exact benefit provided is 20,000 only. तो अगर हम खाली जुलाई का लेते तो TDS नहीं आता. But you have to look at the limit of 38,000. Why 38,000? Because you have to look at 18 plus 20. As it exceeds rupees 20,000, TDS is required to be made. On what amount TDS is required to be made? Only on 20,000. चलो थोड़ा बदल के बात करें. अप्रैल टू जून तक का बेनिफिट 18,000 का, एंड जुलाई ऑनवर्ड्स खाली 6,000 का बेनिफिट प्रोवाइड किया है. 18 प्लस 6 का टोटल करें तो कितना हो गया? 24. Now this 18 plus 6 comes to 24. For the whole year, the benefit exceeds 20,000. Whether the TDS is required to be made on total amount, that is 18 plus 6, 24,000? No. The TDS is required to be made only on 6,000 rupees. That is the benefit which is provided after 30th June. अच्छा, second illustration पे चले. April to June तक 5 लाख रुपए दे दिए, एंड उसके बाद खाली 6,000 दिए. अब उसके बाद 6,000 दिए, 6,000 doesn't exceed 20,000, but whether the TDS is required to be made on this 6,000? Yes, because your limit will be 5 lakh 6,000. So as it exceeds 20, TDS is required to be made. चलो तीसरा है, अप्रैल टू जून तक कोई बेनिफिट ही नहीं प्रोवाइड किया है. जुलाई ऑनवर्ड द बेनिफिट प्रोवाइडेड इज 22,000, एंड ये 22,000 भी कैसे प्रोवाइड किया? देखो मैंने थोड़ा नीचे जो मैंने थर्ड इलस्ट्रेशन जैसा दिया है, TDS 22,000 पे डिडक्ट कर देगा. बट मान लीजिए भाई कि जुलाई महीने में 12,000 का ही बेनिफिट प्रोवाइड किया, तो 12,000 रुपए के ऊपर TDS लगेगा, आगे कुछ नहीं है. अभी 12,000 ही हुआ, 12,000 पे TDS नहीं लगेगा. But as soon as you provide the benefit of 10,000, say in December 2022 to the same person, then 12 plus 10, 22,000 will be subjected to the TDS. So ये 10,000 रुपीस का जो बेनिफिट दिसंबर में प्रोवाइड करेंगे ना, उसमें से आपको 10,000 के ऊपर का TDS नहीं, आगे के 12 प्लस 10 जो नॉर्मल रूल है उनके पूरे के ऊपर का TDS करना पड़े. सो ये मैंने बात की 20 के लिमिट की. सेकेंड,
What is meant by benefit or perquisite? सर बेनिफिट परक्विजिट का मीनिंग कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है. परक्विजिट का मीनिंग तो 17 में है, सेक्शन 17 सैलरी में. बट एज द मीनिंग ऑफ टर्म benefit or perquisite is not provided under 194R. We have to rely on the meaning provided under any other part of the law, or we have to rely on the General Clause Act, or if General Clause Act is also silent, we have to go to the dictionary meaning. Now, if we go to the dictionary meaning says it is advantage or privilege. And perquisite denotes meting out an obligation of one person by the another person. We have Honorable Gujarat High Court, the jurisdictional High Court. In the case of Kamalini Gautam Sarabhai, which says that benefit occurring under section 224, that is the definition of income, means any advantage, gain or improvement of the condition. As per the decision of Food Improvers Private Limited, Mumbai ITAT, the perquisite means obligation of one person made by some other person. But ये सब judgments in a simple language, any benefit or perquisite arising to a person in the course of business profession means he is getting some advantage from the giver. He is getting some privilege from the giver. His obligation is made by the giver, and that would be termed as benefit or perquisite. Now, if we check out with the important issue, मान लीजिए कि जो प्रोवाइडर है वो मुझे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है. अच्छा, एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये बेनिफिट जो मुझे मिला वो बीएनपी में सेक्शन 28 में चार्जेबल नहीं है. क्या प्रोवाइडर को ये चेक करना पड़ेगा कि टीडीएस करते वक्त ये अमाउंट जो प्रोवाइड की या बेनिफिट जो प्रोवाइड किया वो रिसीवर को बीएनपी के हेड में चार्जेबल हो? लिसन केयरफुली. इट सेज deductor is not required to check whether the amount of benefit or perquisite whether taxable under section 28(4) or not. The amount could be taxable under 41(1). We'll have a separate issue of 41(1). Section 194R of the Act cast an obligation on the person responsible for deducting, giving the benefit or perquisite to make a TDS at the rate of 10%. That's it. There is no further requirement he has to check. There is no further requirement to check under which section it has. I am clear. Whether 28(4) would be applicable in the hands of receiver or not is not the lookout of the giver. He has to make the TDS. बहुत बड़े कंफ्यूजन यहाँ पे होने वाले हैं. He has to make the TDS. But हाँ, एक चीज देखनी है. But as the words of the law are, 194R is required to be made if the benefit or perquisite arising from business or the exercise of the profession. It is mandatory that the benefit or perquisite must be, I would say, somewhat connected with business, and the person to whom it is provided must be having BNP. This rules out the TDS under 194R on the perquisite provided by you to your employees or perquisite provided to those who are not carrying on any business and profession. Because circular may be worded 28(4) or 41(1), which is part and parcel of the topic business and profession only. And friends, here TDS is required to be made whether the amount is taxable in the hands of recipient under the head business profession under section 28 or not. तकलीफ कहाँ होने वाली है? पेयर ने TDS कर दिया, रिसीवर के हाथ में ये अमाउंट मान लीजिए बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल ना हो. We'll be going to an illustration of the hospital which is also given in the circular. So in that particular case, there is a big mismatch which is going to come in AIS. But the August gathering would agree with me कि ऐसे mismatch से तो अभी हम एकदम habituated हो गए हैं. 26 या
सॉरी AIS या 26 AS, कितनी सारी ऐसी चीजें बता रहा है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है देन व्हाट एग्जैक्टली द टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। अभी एक मेरे क्लाइंट के केस में हुआ था कि AIS में जितनी जितनी इंफॉर्मेशन दिखा, क्लाइंट इज सो मेटाकुलस एंड ही इज ईच एंड एवरी केस इज कवर्ड बाय ऑडिट। इतना परफेक्शनिस्ट है कि वो एग्जैक्ट मेरे पास लेके आया कि ये आप जो मेरे टोटल ट्रांजैक्शन देख रहे हो 1738 ट्रांजैक्शन मेरे है स्टॉक मार्केट के, उसमें से ये 28 ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किए हैं विच इज अपीयरिंग इन AIS। अब ऐसे तो हम हैबिचुएटेड हो गए, बट दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग इंपैक्ट बिकॉज इफ इट इज मेड टैक्सेबल आई अफ्रेड इट वुड बी अ प्रॉब्लम, नंबर 1। नंबर 2, it provides that TDS is required to be made when the benefit or perquisite is provided whether convertible into cash or not. The question is, एक्ट के वर्बेटम देखो तो एक्ट के वर्बेटम ऐसे है, इफ आई टेक यू बैक टू 194, सॉरी माय मिस्टेक, 28(4), it says the value of any benefit or perquisite whether convertible into money or not arising from business and profession. Friends, there the TDS is required to be made. Friends, here what happens is that TDS is required to be made if the benefit is convertible into money or not. Same way 194R के verbatim देखे तो has been deducted in respect of benefit or perquisite arising at the rate of 10%. Friends, in that particular case, it is whether convertible into money or not is the word in 194R also. Now, my question is that while making the TDS, is it necessary to check that whether the amount has to be provided in kind or in cash amount also, or the composite amount also? TDS is required to be paid. I'll clarify. See friends, here circular makes it very clear. It says that if the benefit is provided which is wholly in kind or partly in cash or partly in kind, and such part of cash is not sufficient to meet the liability of the deduction of tax in respect of whole of such benefit or perquisite, the person responsible for providing such benefit or perquisite shall, before releasing, make the TDS under section 194R of the Income Tax Act. Plus, अगर हम सर्कुलर के वर्ड पे टर्म रेड करें तो कह रहा है that even if the benefit or perquisite is provided in kind or partly in cash, partly in kind, or fully in cash, everything is brought under the scope of 194R. सेक्शन पढ़ो ना, प्रोवाइजो पढ़ो सेक्शन का, तो वो कह रहा है होल्ली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। बट अगर आप सीबीडीटी का सर्कुलर पढ़ो, देखो यार ये सेक्शन में क्या कवर किया, होल्ली इन काइंड और पार्टली इन कैश, पार्टली इन काइंड। सीबीडीटी का सर्कुलर बहुत क्लियरली बोल रहा है काइंड, कैश काइंड and fully in cash, TDS is required to be made. So intent of the circular is very clear that it will cover cash also. अब यहां पे दो बहुत बड़े इश्यू है। Question 1, what about the judgment of Honorable Supreme Court in the case of Mahindra and Mahindra? This is the apex court judgment, sir. The law of land, Honorable Supreme Court has said in the case of Mahindra and Mahindra that if the benefit is exclusively provided in cash, it will not amount to 28(4).
It will not be chargeable under that BN. Now, if it doesn't amount to 28.4, you are going to argue कि हमने स्टार्ट किया तभी बोला कि 28.4 में टैक्सेबल है या नहीं है. TDS is required to be made. Agreed. But you look at the verbatim of 194R, which is adopted from 28.4 only. 28.4 के verbatim में kind or wholly in case wholly in or partly in case partly in kind. Same verbatim is adopted under 194R. Can we take the plea of Mahindra and Mahindra? That is first question. Second, यार मुझे बताइए, मेरा क्लाइंट, मैंने लाख रुपए की फी कोट की थी, ये 25,000 वाले मोबाइल के ही केस पे वापस जाओ, उसका उन्होंने मुझे पेमेंट किया 194J कर. अब मेरा क्लाइंट मुझे एक्स्ट्रा 25,000 रुपए ही प्रोवाइड कर रहा है, तो वुड इट बी कॉल्ड बेनिफिट और परक्विजिट और वुड इट बी कॉल्ड प्रोफेशनल फीस? विल इट बी सब्जेक्टेड टू R और विल इट बी सब्जेक्टेड टू J? You tell me. हाँ, I am clear. एक चीज होगी यहां पे, मेरे केस में क्लाइंट विल बी कंफ्यूज. हाँ, रेट दोनों का सेम है, J का एंड R का 10% ही है, बट सब बताने का क्या, क्लाइंट इतनी कंफ्यूजन कम है. क्लाइंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, टैक्स कंसल्टेंट को तो ये नई कंफ्यूजन लेके आएगा क्लाइंट कि R या J. इट इज गोइंग टू बी अ बिग कंफ्यूजन. नंबर 1. नंबर 2, सब बिजनेस वाले के लिए समझाओ. सोनी की एजेंसी है मेरे पास, सोनी टेलीविजन की. अब मैंने करंट ईयर में मान लीजिए कि 100 टीवी एक महीने में बेच दी, मैं टारगेट अचीव हो गया. तो सोनी वालों ने मुझे मान लीजिए कि एक, से फॉर एग्जांपल के गोल्ड गिफ्ट में दिया 10 ग्राम, 50,000 रुपए प्राइस है. दे विल बी मेकिंग द TDS अंडर 194R. बट सोनी वाले मुझे 50,000 चेक से ही दे दे के रख भाई. तो when Sony gives it to the dealer, it is not going to be 194J or 194C. Their government circular is correct. Their 194R is correct. But when it is provided to professionals जिनका पेमेंट पे आप J कर रहे हो या C कर रहे हो या H कर रहे हो, then I am afraid there is going to be a big confusion. दूसरी कंफ्यूजन ऐसी होगी कि whether circular will overrule the Supreme Court judgment or circular can overcome Supreme Court judgment or not. Obviously, the days will tell. We have the circular which is very 194R2, which is very clear that it would be binding on the giver as well as it would be binding on the who is the income tax department. It is not binding on the receiver. It is not binding on the receiver means वो इनकम बताए, वो इनकम ना भी बताए, सब फिर झगड़ने जाओ, देखा जाएगा. बराबर है. सो इट इज बेनिफिट. अच्छा, कौन कौन से बेनिफिट अकेले केस में होंगे? वेवर और सेटलमेंट ऑफ लोन. 41(1) में टैक्स होगा या नहीं वो भी बहुत बड़ा इश्यू है, बट दैट वुड बी वन. इंक्रीज इन द क्रेडिट पीरियड. लोगों को मैं 30 दिन की क्रेडिट देता हूं, मैंने किसी को 40 दिन की क्रेडिट दी, थोड़ा बेनिफिट परक्विजिट होगा. इंटरेस्ट फ्री लोन टू सब्सिडरी और एसोसिएटेड एंटिटी और सेल ऑफ गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन व्हाट इज चार्ज नॉर्मली. अब ये सब केस के बेनिफिट हुए. All this, would it be subjected to TDS? In my humble opinion, no, it would not be subject. काहे का यार, मुझे समझाइए, क्रेडिट पीरियड मैंने ज्यादा दिया, वो काहे की बेनिफिट परक्विजिट हुई और हाउ टू क्वांटिफाई? It is a big thing. Would it be the notional interest which you are going to quantify? No. So in my humble opinion, no TDS. Friends, the next one, if the capital asset is given, whether it would be subjected to TDS, ये सब जजमेंट मैंने सिबिलिटी के सर्कुलर से ही उठाया. अब सब जजमेंट में, see, I am to discuss this CBDT circular and obviously at a later stage we will be trying to जो भी मेरे opinions है, that I would try to give to the August gathering for the purpose of making the things simple for them in the office. Friends, as far as this perquisite is concerned, there is no requirement whether it is taxable in the hands of receiver or not, whether it is capital or revenue in nature. Capital asset दी हो ना तो भी TDS करना क्या है, obligatory है, compulsory है. Now the issue is that if, say for example, ये सोनी वाले डीलर की मैंने अभी बात की, उसको 50,000 का
गोल्ड दिया, gold is a capital asset. Whether TDS is required to be made? Answer is yes. The question is कैसे? उसका भी सर्कुलर में आगे आंसर दिया हुआ है, बट एज इट कम्स आई विल चेक दैट आउट. 3 मेथोडोलॉजी है. पहला, 50,000 जो गोल्ड दिया उसको आप नेट गिनो, एंड 90:50,000 हाउ मच इज टू 10 करके इसका ग्रॉस अप करके टीडीएस का. दैट इज फर्स्ट सिंपल मेथोडोलॉजी. सेकंड मेथोडोलॉजी इज कि आप ये 50,000 जो गोल्ड दे रहे हो ना, रिसीवर के पास से ही, डीलर के पास से ही बोलो कि वो 5,000 रुपए आपके पास जमा करवाए, वो आप जमा करवा दो 194 आर में, एंड अकॉर्डिंगली टीडीएस करो. एंड तीसरी बहुत बड़ी मेथोडोलॉजी एडवांस टैक्स की दी हुई है, विच वी विल चेक आउट एट अ स्लाइट लेटर स्टेज, बट ऑन कैपिटल असेट प्रोवाइडेड टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी. मान लो 50,000 के गोल्ड की जगह एक्टिवा प्रोवाइड किया, मान लीजिए 80,000 का, लाख रुपए का एक्टिवा अभी आता होगा, वो सोनी के डीलर को प्रोवाइड किया, या एक्सेस प्रोवाइड किया, या जुपिटर प्रोवाइड किया. Whether TDS is required to be made? Answer is yes. Same methodology से. अब मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं सीबीडीटी के सर्कुलर से. क्योंकि सीबीडीटी का सर्कुलर तो मेजोरिटी, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेजोरिटी लोगों ने सीबीडीटी का सर्कुलर पढ़ा हुआ है. दे आर अवेयर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली सीबीडीटी हैज सेड, एंड दे हैव ट्राइड to interpret majority of the circular. But friends, here if I check out with one extra aspect, that extra aspect is that if ये गोल्ड मिला एंड मैं ये गोल्ड और सोनी का जो डीलर है वो ये गोल्ड बेच दे, तो क्या उनको 50,000 की कॉस्ट का डिडक्शन मिला? He tax it under the business. Would he be able to get the deduction of that 50,000 rupees? Because section 48-49 कैपिटल गेन के टॉपिक में गिफ्ट मिले ना, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि आपकी जितनी गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी हो उतनी कॉस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा, बट 28(4) में टैक्सेबल हो तो उतना डिडक्शन मिलेगा या नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है. Whether it would be deductible or not is a big question mark. Number 1. Number 2, एक्टिवा मिला वो सोनी के डीलर, एंड वो एक्टिवा भी सोनी का डीलर लेके, या जुपिटर मिला वो लेके अपनी ऑफिस जाता है. He is using it for business profession. Whether under section 43(1) it would be added to the block of asset or not? That answer is not given by the CBDT circular. यार अब सर्कुलर बनाते हो, वो भी 1 फरवरी को आप बिल लाओ, उसके अप्रोक्सीमेटली फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 16 जून, 4.5 महीने के बाद, सेक्शन आने के 15 दिन के पहले, तो एटलीस्ट कंसल्ट द स्टेक होल्डर्स. वाई यू आर नॉट कंसल्टिंग द स्टेक होल्डर्स? वाई यू आर राइटिंग whatever you wish to write, with all due respect, friends? So here the clarification is not given. The clarification is required as far as the depreciation, as far as the deductibility of the cost for the capital asset is concerned. No clarification in the circular. Sir, the next issue in the circular is whether cash sale discount, cash discount, rebate benefit are perquisite. Luckily the answer given is no. That is very good. Luckily the answer given is no. Now this discount may be in form of even freebies provided on the purchase of some item, like अभी आप जाओ Pantaloons में, buy 2 get 1 free. TDS is not required to be made there. बराबर है. Same way आप जाओ से जेट ब्लू में, there is 40% discount. TDS is not required to be made. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Rebate, cash discount, sale discount, no TDS. But certain examples are given. When some other incentives are given, then TDS is required to be made. Like जैसा मैंने आगे बोला, कार दिया, टीवी दिया, कंप्यूटर दिया, गोल्ड कॉइन दिया, I'm coming, मोबाइल फोन दिया. Or when person is sponsors a trip for the recipient or he is a relative for achieving certain target, or free ticket for an event. आईपीएल की टिकट दे दी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल हो रही थी, हमारे एक क्लाइंट ने अभी दी हुई है काफी डॉक्टर्स को, pharma company. I'll be coming to their illustration, but once we cover up this. Or when a person gives medicine sample free to medical practitioner, it's going to create a big issue. All this would be subjected to TDS.
नाउ हियर माय क्वेश्चन इज दैट यहां पे ऐसे मैंने इलस्ट्रेटिव मोड दिए हुए हैं कि बाय वन गेट वन टाइप सेल्स प्रमोशन और फ्री आइटम्स ऑन परचेज ऑफ प्रोडक्ट, कैश बैक, कैश डिस्काउंट, नो ईएमआई स्कीम्स, रिडम्पशन ऑफ एक्यूमुलेटेड, यार बैंक लोन्स में जाओ accumulated point redeem करके आपको डिस्काउंट मिलता है, no TDS is required. I mean, no 194R would be made over here. But the question is that here, when all these benefits are given, no TDS. Gold coin given, there is going to be TDS. अब मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि assume I am purchasing the goods or ready-made garments worth say 2 lakh rupee from JetBlue presently, and वहां पे सेल चल रहा है, JetBlue मुझे से 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 40,000 का डिस्काउंट मुझे 160 पे करना है, मैंने 160 पे किया, दैट्स इट, मैटर खत्म हो गई, नो TDS. बट मैंने 2 लाख के गुड्स परचेज किए और जेटब्लू ने मुझे बोला कि 2 लाख के गुड्स आप परचेज कर रहे हो, जाओ हमारी तरफ से आपको 2 ब्लेजर्स एंड 2 शेरवानी फ्री, नो TDS. पर जेटब्लू ने मुझे बोला कि आप इतना सारा परचेज कर रहे हो ना, तो ये गोल्ड कॉइन रखो 40,000 का. सीवीडीटी बोल रहा है TDS. तो जेटब्लू मेरा बिल कटवाते वक्त 5 नंबर लेने बैठेगा, हाउ TDS यार, मुझे समझा. अच्छा, जेटब्लू मुझे पूछने बैठेगा कि आर यू इन द बिजनेस प्रोफेशन और नॉट, बिकॉज इट इज इन कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोफेशन. फ्रेंड्स, the intention of law or intention of circular is not this. Intention of law or intention of circular is not to make the TDS from these customers. The intention of circular is to make the TDS when the manufacturer provides the same to wholesaler or wholesaler provides the same to dealer, not when dealer gives it to the customer. Customer तो कितने भीड़ भाड़ में आएंगे, कहां वो बिल बनाने वाला बेचारा कैश गिनती करने बैठेगा या मेरा 5 नंबर लेने बैठेगा, और क्या 194R. No, that is not the intention of the legislature. So please do not worry. Believe me, as I understand, the major hit of this circular or 194R or 28(4) to make it more, I would say, hard for the taxpayer, this particular section is, but it is not to trouble we people, it is to have the impact on those who are achieving the target, and big conferences, yeah, holiday trip, leisure trips are given to them, or television is given to them, or gold coin is given to them, or car is given to them, or I would say they are given, say for example, the pharma company giving freebies, or pharma company giving certain benefits to their medical representatives, pharma stores, or I would say doctors. That is the intention. Now here it just clicked in my mind one important issue. यार मैं फ्लैट परचेस करने जाऊं, अभी काफी फ्लैट वाले ऐसी स्कीम लाए हैं कि 1 करोड़ का फ्लैट परचेस करो और 8 लाख की कार फ्री. If I am given car worth 8 lakh, whether the TDS is required to be made, मैं 194I करूंगा, I करूंगा 194IA, सॉरी, एंड वो 194R करे. हियर तो 5 नंबर ले सकते हैं, जेट बी वाला नहीं ले सकता है यार, बट यहाँ पे ये तो 5 नंबर मेरा ले सकते हैं. मैं तो बायर हूं, मेरा डीड में भी 5 नंबर आएगा. Whether they are suppose, अच्छा उनको मुझे पूछना पड़ेगा जॉब करते हो या इट इज इन कनेक्शन. इट इज नॉट इन कनेक्शन विथ माय बिजनेस प्रोफेशन बॉस. उनको खर्चा अलावेबल मिलेगा, उन्होंने मुझे कार दी तो, या उन्होंने मुझे गोल्ड कॉइन दिया तो, क्या वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? अरे यार, मैं जनरली ऐसा बोलता हूं कि कैपिटल असेट की कॉस्ट रिड्यूस करो, इससे का आप जब फ्लैट बेचने जाओ तब उसकी कॉस्ट उतनी रिड्यूस होगी. 28(4) में थोड़ा टैक्सेबल होगा. आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई गो एंड बाय अ फ्लैट from a builder and
1 करोड़ का फ्लैट है, मैंने बिल्डर को 1 करोड़ दिए, 194 आई है करके 1% वाला, और वो मुझे बोल रहा है कि कार ले जाओ 8 लाख की, और मैं कार लेके जाऊं और डिपार्टमेंट बोले चल भाई आ जा 28.4, थोड़े होता है। Am I providing any services, any business? Is it connected to a business profession, to the builder or not? It is not, friends. But friends, some clarification on the same is required. My interpretation is pretty clear. My interpretation is no, there is no TDS. कौन सी अमाउंट पे TDS करना पड़ेगा अगर काइंड में प्रोवाइड किया हुआ है तो? फ्रेंड्स, as far as if the benefit is provided only in kind, then TDS is required to be made on the purchase price of the giver. Assume कि गिवर जो प्रोवाइड कर रहा है वो खुद ने मैन्युफैक्चर ही किया हुआ है, देन वो जितना कस्टमर से चार्ज कर रहा है ना उसके ऊपर। बट एक चीज क्लियर है कि जीएसटी की अमाउंट के ऊपर कोई टीडीएस नहीं आएगा। मीनिंग thereby, say for example that if say that Sony company has provided to dealer gold coin 50,000, then in that particular case उन्होंने गोल्ड कॉइन कितने में परचेज किया? 50,000 में। टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन 50,000। अच्छा, उस दिन मार्केट वैल्यू 50,000 थी, पर ज्वेलर ने उसको 48,000 में दिया तो 48,000। अच्छा, सोनी टेलीविजन, सोनी कंपनी ने मान लीजिए कि टेलीविजन के डीलर को सोनी का ही मोबाइल गिफ्ट में दिया, वो डीलर मोबाइल बेचता ही नहीं है। इन दैट पर्टिकुलर केस द क्वेश्चन इज कितने के ऊपर टीडीएस? उनके मोबाइल की जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो ना, यही मोबाइल वो मार्केट में कितने में बेचता है सोनी कंपनी, उतने के ऊपर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड विदाउट जीएसटी अमाउंट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, social media influencer is given a product of a manufacturing company so that he or she can use the product and make audio video to speak about the product on social media is coming out like anything for these young members। हम लोग तो अभी मिड एज हो गए, एजेड हो गए, यंग मेंबर के लिए दिस सोशल मीडिया इज इंस्टा या ट्विटर या व्हाट नॉट, राइट? यूट्यूब पे वीडियो बना के एक प्रोडक्ट खाली दे दी। फ्रेंड्स, इन दैट पर्टिकुलर केस टू थिंग्स वुड बी इंपॉर्टेंट। मान लो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को वो उनके मान लीजिए कि 2-5 लाख फॉलोअर है इंस्टा पे, और उनको बोला कि एक रील बना के रख भाई। रील ही होता है ना, कुछ ऐसा ही होता है ना, यंग मेंबर्स आर देयर यहाँ पे, भाई रील बना के रख जिसमें बता कि आई एम यूजिंग से दिस आईफोन। देन इन दैट पर्टिकुलर केस whether the TDS is required to be made if the, say for example, some mobile retail shop or Apple is giving this iPhone to the social media influencer, अगर वो वापिस देने वाला है ना तो नो TDS। पर उसने बोला है कि मैं रील तभी बनाऊं जब आप मुझे ये मोबाइल यूज करने ही दोगे, यू विल नॉट टेक इट बैक फ्रॉम मी, देन TDS is required to be made under 194R. It's very simple, very clear कि सोशल मीडिया प्रोवाइडर को आप उनकी फीस देते हो, आपकी खुद की ही प्रोडक्ट उनको दी। In that particular case, 194R is required to be made. If he's not going to return, if he's going to return, मैं तो नहीं यूज करता हूँ, I use only Samsung or I use only OnePlus, then in that particular case, no TDS is required to be made. Friends, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये मार डालेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, माय फ्रेंड्स, बी केयरफुल ऑन दिस। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मींस, से फॉर एग्जांपल के मेरे आर्टिकल्स को एंड कलीग्स को ऑडिट पे जाना है मुंबई, मैंने फ्लाइट की टिकट, क्लाइंट मुंबई का है, उसने बोला कि आप यहां पे भेज दो, लॉजिंग बोर्डिंग भी हम ही बेयर करेंगे, उनकी फ्लाइट की टिकट भी हम ही बेयर करेंगे। आई सेड फाइन, 2 ऑप्शंस आर पॉसिबल। मुझे बोला अभी आप पेमेंट कर दो पलक भाई, बाद में हम आपको रीइंबर्समेंट दे देंगे।
मैंने अभी पेमेंट कर दिया, मेरे 3 कलीग्स गए, उनकी फ्लाइट टिकट हुई मान लीजिए 30,000 और वहां पे रहने का खर्चा हुआ से फॉर एग्जांपल अनदर 30,000, 60,000। मैंने अभी 60,000 होटल एंड फ्लाइट बुकिंग के पे कर दिया, मैंने एजेंट थ्रू ही बुक करवाया। अब बिल मैंने मेरे नाम का दिया, पलक का, एंड माय क्लाइंट इज गिविंग द रीइंबर्समेंट 194 आर। सर्क्यूलर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं 194 आर, बट मैंने पेमेंट मैंने किया, मैंने बिल बनवाया, टिकट मेरे 3 कलीग के नाम की ही करवाई, होटल का बुकिंग भी 3 कलीग के नाम का ही करवाया, पर जो मैंने एजेंट से जो बिल लिया वो किसके नाम का लिया, मेरे डायरेक्टली मेरे क्लाइंट के नाम का ही। देन नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। सो बी केयरफुल while getting the booking done. TDS is required to be made if it is in your name and thereafter you are getting the reimbursement. That is what circular says. I would put it this way, that circular number 12 2022 contradicts with circular number 715, which is one of the biblical circular for the TDS. That circular says that if the reimbursement of expenditure is a part of the bill, then that reimbursement will get the colors of the main payment. So मेरी प्रोफेशनल फी पे वो 194 जे करने वाले हैं, तो reimbursement पे भी जे ही करना है if I'm including the same in my bill. But I afraid the circular is telling us to take the invoices in the name of the person who is going to reimburse this. Then it would avoid the, और यार ये मेरे लिए इनकम कहां हुई, एक बार उसने 194 आर कर दिया तो तकलीफ कहां होगी कि मैं इसको मेरी इनकम में नहीं बताऊंगा तो आ जाएगा 143 1 है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ईयर व्हेन वी फाइल द रिटर्न, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी 190 143 1 है इफ आई डोंट शो दिस एज माय इनकम। मेरी इनकम कहां है यार, मैंने तो पे कर दिया, क्या मैं पहले इनकम बताऊंगा बाद में खर्चा बताऊंगा? इट वुड बी अ टू टॉप स्टोरी। अच्छा, आई हैव थर्ड ऑप्शन आल्सो गोइंग अबाउट द सर्कुलर, दैट इज मान लीजिए कि मैंने बिल क्लाइंट के नाम का ही लिया, ट्रैवल एजेंट मेरा था, इन लोगों को जाना था मेरे कलीग्स को, तो मैंने बिल क्लाइंट के नाम का लिया एंड मैंने क्लाइंट के नाम का बिल लेके अभी से फॉर एग्जांपल खुद पेमेंट किया, क्लाइंट रीइंबर्सेस टीडीएस, मैंने बिल मेरे नाम का लिया, मैंने पेमेंट नहीं किया, तो क्लाइंट फी भी नहीं देता, ये 60 अपना थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा। क्लाइंट ने डायरेक्टली बिल मेरे नाम का है, सर्कुलर कह रहा है बिल मेरे नाम का हो, मैंने पेमेंट किया हो एंड क्लाइंट मुझे रीइंबर्समेंट दे तो 194 आर। मैंने बिल मेरे नाम का दिया, मैंने एजेंट को पेमेंट ही नहीं किया, मैंने क्लाइंट को ही बोला तू सीधा चेक लिख क्लाइंट एजेंट के नाम। Whether the TDS is required to be made? Answer as per the circular, exact circular में इसका कुछ नहीं दिया है, but answer is yes. किसका TDS करेगा, कहां से TDS करेगा? वो रिइंबर्समेंट मुझे दे रहा है ना, तो कैश में पेमेंट हुआ उसका TDS कर सकता है, यहाँ पे काइंड में क्या वो ग्रॉसिंग अप करके TDS करेगा? It is going to create a big problem. This also need to be answered by the Central Board of Direct Taxes. Same way, friends, business conferences. Whether business conferences would be subjected to TDS or not. See, if it is the business conference with an object of educating the dealer or educating the customer, then in that particular case, TDS is not required to be made. But say new product ka launch hai, या say for example discussing how your product can be better than others, या डीलर या कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए, या टीचिंग सेल्स टेक्निक टू द डीलर और कस्टमर, या एड्रेसिंग क्वेरी ऑफ द डीलर और कस्टमर, और रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट विद द डीलर और कस्टमर, then friends, no TDS. But if such conference is giving incentive or benefit to only selected dealer or customer who have achieved the particular target, in that particular case TDS is required to be made. Like वो सोनी के 100 टीवी जिन्होंने बेचे उसको गोल्ड या एक्टिवा देने की जगह है कहा कि तेरे को एक ट्रिप स्पॉन्सर्ड
आबू की ट्रिप आएगी 50,000 में, तो अभी इतना कॉस्टली हो गया है, तो आबू अंबाजी की एक ट्रिप हम करवाएंगे। इन दैट पर्टिकुलर केस टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू। सब भी डीलर को ले जाओ जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये सोनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये नए प्रोडक्ट की क्या क्या पिक्यूलरिटीज है, हाउ यू शुड सेल, फाइन, नो टीडीएस। म्यूचुअल फंड एजेंट्स selling certain mutual fund, the company is taking them to, say for example, Singapore, Malaysia, 194R. Say for example, mutual fund company taking all the agents to Singapore, Malaysia, no 194R, पर कि सबको तो नहीं ले जाते, जो टारगेट अचीव करते हैं उनको ही ले जाते हैं, they are all covered। ये कोई अपनी इनकम में बताता नहीं था, now they have to make। अच्छा फ्रेंड्स, यहां पे भी स्पेसिफिकली बोला है कि if expenditure is attributable to leisure trip, then there is going to be TDS. Expenditure is incurred for family member. Say for example, सभी डीलर को ले गए पर फैमिली के साथ ले गए, then in that particular case फैमिली मेंबर की कहां जरूरत थी, उनको कहां अकाउंट सेटलमेंट करना था, या उनको कहां प्रोडक्ट की पिक्यूलरिटी समझनी थी, 194R। or expenditure on participation of dealer business conference for days which are on account of prior stay or overstay। डीलर गया 3 दिन बेचारा अकाउंट सेटलमेंट में बैठा है, या प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में बैठा है, या प्रोडक्ट की पिक्यूलरिटी समझ में बैठा, फिर उनको लगा कि नहीं गोवा ले गए हैं, 2 दिन में थोड़ा लिजर कर लेता हूं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे बागा बीच पे मैं बैठूंगा शांति से। That 2 days is also being sponsored by the manufacturing company। 194R is required to be made for those 2 days। वो 3 दिन के लिए स्पाउस के साथ गया था, तो स्पाउस का 3 दिन प्लस 2 दिन एंड डीलर का 2 दिन, 194R is required to be made। यहाँ पे मैंने लीजर का मीनिंग दिया, इट इज ओनली फॉर द एकेडमिक पर्पस, सो आई एम नॉट इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन टू द सेम, बिकॉज इट इज जनरली द एंजॉयमेंट वगैरह। नाउ सी फ्रेंड्स, इफ द TDS is partly in cash and partly in, sorry, my mistake, the benefit provided is partly in cash and partly in kind, then in that particular case how the TDS is required to be made। Friends, 194I provides that in case where the benefit or perquisite is wholly in kind or partly in cash, partly in kind, then if the part of the cash is not sufficient to meet the TDS liability, the person responsible for providing such benefit or perquisite must ensure that the tax have been paid before releasing the benefit or perquisites। Friends, same way, the tax deductor can rely on the declaration from the recipient that appropriate tax has been discharged along with a copy of the advance tax payment चलन। ये मैं बोल रहा था, जो मैंने आगे नहीं समझाया, कि काइंड में हो या कैश एंड काइंड में हो, एंड कैश पोर्शन इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द TDS, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि एक आप कैश से TDS करो, दूसरा उनके पास से कलेक्ट करो, तीसरा ग्रॉस अप करो। अब ये भी नहीं हो रहा है ना, तो एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि रिसिपिएंट जो है, एक्टिवा उनको दिया सोनी के डीलर को, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप उनको बोलो कि इसके ऊपर जो एडवांस टैक्स आ रहा है ना वो पे कर दे, एंड ये एडवांस टैक्स का चलन नेक्स्ट 26 क्यों बने ना, उसके पहले गिवर को दे दे, एंड 26 क्यू में for 194R this advance check challan number would be linked so that the deductor will not make the TDS। अब यार डिपार्टमेंट तो बातें ऐसे कर रहा है as if they are very much tax savvy and we are also very much tax savvy। Was I am clear that this advance tax वाला पॉइंट, हाँ डिक्लेरेशन नहीं है, सुनो 15G 15H नहीं है, ये 15AA भी नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं कि मैं भर दूंगा या भर दूंगी या मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, भरो एडवांस टैक्स एंड उसका चलन दो, नंबर दो, तो TDS बराबर। एंड लास्ट फ्यू इश्यूज
for 194R. Friends, charitable trust circular से ही है, को goods distribute करे तो whether TDS is required to be made. Generally charitable trusts are not involved in any business and profession activity. As they are not involved in any business and profession activity, in my humble opinion, as well as the opinion of the circular, TDS is not required to be made. Friends, second, it is very clear that government hospital को कुछ freebies वगैरह provide करे तो भी 194R is not required to be made. Same way, non-resident को ये benefit provide किए हो तो 194R करना पड़े, categorically no. Circular में भी बोला है, as well as I would be clear that the verbatim of the legislature are, if any person responsible for providing any benefit or perquisiting in the course of business or profession to a resident, then only TDS is required to be made. Non-resident को ऐसा कोई benefit or perquisite provide किया हो तो TDS is required to be made under section 195 of the Income Tax Act. Same way, friends, if there is pharma company distributing free sample of medicine to the medical practitioners who are employee of the hospital, I'll clarify. Say for example, friends, there is X pharma company giving free medicine as a sample to an individual doctor. In that particular case, here, whether the TDS is required to be made, if it is given to independent, well, let us take this first. Like X pharma कंपनी ने डॉक्टर पलक पावागढ़ी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है, उनको फ्री सैंपल दिए कि सर ये मेरी दवाई रखो, खांसी के लिए बहुत अच्छी है, अब जो भी पेशेंट आए उसको देना. Whether they have to make the TDS 194R, says yes. Says yes. किसका 10 नंबर जाएगा? पलक पावागढ़ी इंडिविजुअल का. अब मान लीजिए कि पलक पावागढ़ी इंडिविजुअल इज अ डॉक्टर वर्किंग विथ, से फॉर एग्जांपल, अ हॉस्पिटल कॉल्ड से जाइडस हॉस्पिटल. फार्मा कंपनी ने जाइडस हॉस्पिटल को ये कफ सिरप्स प्रोवाइड की. आई एम ENT over there, मुझे ही मिलने आए थे, पर मुझे बोला कि आप ये अपने पेशेंट को रिकमेंड करना. आई एम वर्किंग देयर as a consultant or as an employee. Then in that particular case, pharma company while giving the benefit will make the TDS of that hospital, Zydus hospital का part number लेंगे, and Zydus has in turn given it to me. So Zydus will make 192 if it is salary, or Zydus will make 194R if it is not salary. If I'm consultant, Zydus will make 194R from mine. Friends, Zydus को तो एक्चुअली कुछ मिला नहीं, बिकॉज Zydus ने लिया, Zydus ने मुझे, एक्चुअली तो मुझे भी कुछ नहीं मिला, मैंने मेरे पेशेंट को दिया, राइट. अब मैंने मेरे पेशेंट को दिया ना उसका, तो मैं मेरे पेशेंट के पास से डेफिनेटली या अमाउंट चार्ज करूंगा या अमाउंट नहीं चार्ज करूंगा. बट फ्रेंड्स, 194R is required to be made. I'm damn sure that this is also going to create a big issue. Same way friends, एक एक्स्ट्रा इश्यू यहाँ पे अराइज होता है कि मान लीजिए कि फ्री सैंपल किसी मेडिकल शॉप को दिए, whether the TDS is required to be made? Yes, obviously the TDS is required to be made if he is engaged in the business and profession. And friends, यहाँ पे 100% the TDS will be coming into play. Salaried person को कोई benefit और perquisite तो आगे ही मैंने clear कर दिया है, sorry my mistake. Salaried person कोई ऐसा benefit और perquisite दे, 194R applicable होगा. Like I'll clarify. वो 25,000 रुपए का मोबाइल फोन मेरे क्लाइंट ने दिया था in the beginning of this particular session. Salaried person का केस स्क्रूटिनी में आया. क्यों? तो क्या कैपिटल गेन किया था, एफओ का लॉस है मेरे सैलराइड पर्सन का, ह्यूज अमाउंट का, एंड दैट्स द रीजन हिज केस इज इन द स्क्रूटिनी. नाउ इफ हिज केस इज इन द स्क्रूटिनी,
I fought the case, I won the case. या penny stock किया है, assume I fought the case, then assume I won the case. Penny stock is very difficult to win. VSV आया है penny stock के लिए तो बराबर, पर assume I won. तो उन्होंने मुझे ₹1,00,000 दिए प्लस 25,000 का मोबाइल. किसने? मेरा क्लाइंट जो सेलराइड है. The question arises here whether TDS is required to be paid by the seller-right person. No, because he is an individual. His turnover in the business doesn't exceed 1 crore. His receipt in the profession doesn't exceed 50 lakhs. No TDS is required to be paid by him. भले वो 25,000 का मुझे मोबाइल फोन दे, तो अभी ये मोबाइल फोन मैं मेरी डॉटर को दे दूं ना, तो भी मुझे टैक्सेबल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खर्चा नहीं मांग रहा है. वो खर्चा नहीं मांग रहा है तो उनको टीडीएस करने की जरूरत नहीं. अच्छा, मान लो कि इंडिविजुअल है, उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं है लास्ट ईयर का, या 50 लाख से ऊपर की ग्रॉस रिसीट नहीं, वो खर्चा अलाउेबल भी मांग रहा है. टीडीएस करना पड़े ना करना पड़े, whether he'll be able to get the expenditure deductible. भाई लास्ट ईयर तक मिलता ही था ना, मांगते ही थे ना, it is definitely eligible for the deduction to him. Same way, अगर कोई बेनिफिट सेलराइट पर्सन को प्रोवाइड करे तो whether 194R is required to be made? Categorically no. 192 में, सेक्शन 72 में ही परक्विजिट टैक्स होगी. टू बी मोर स्पेसिफिक, गोल्ड कॉइन सोनी वालों ने अपने डीलर को दिया तो 194R, बट डीलर के वहां जो एम्प्लॉई है उसमें से किसी ने बहुत बढ़िया सेल किया और वो एम्प्लॉई को दिया, then TDS is required to be made by the dealer for the employee, not under 194R, but dealer to the employee under section 192 only. Sir ji, is it possible that I can apply for lower TDS or nil TDS? 197 नंबर का जो सेक्शन है, फॉर्म नंबर 13 फाइल करके आपको 15AA लाना है, उसमें एक सेक्शंस का लिस्ट दिया हुआ है कि ये सेक्शन के लिए आप 197 में एप्लीकेशन कर सको लोअर टीडीएस या नील टीडीएस के लिए. उसमें 194R इज नॉट कवर्ड एंड हेंस एज ऑफ नाउ लोअर टीडीएस और नील टीडीएस इज नॉट पॉसिबल. फ्रेंड्स, अगर कोई बेनिफिट पर्सनल नेचर का प्रोवाइड किया तो whether TDS is required to be made? Friends, 194R is required to be made only if benefit or perquisite is arising from carrying on business or profession. Hence, receipt of benefit or perquisite in personal capacity would not be subjected to tax deduction under 194R of the Income Tax Act. अब ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. मैं रिसीवर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं. अज्यूम के आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे किसी स्टूडेंट, पास्ट स्टूडेंट हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई देगा नहीं एंड आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, बट अज्यूम कोई पास्ट स्टूडेंट हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग एंड हैविंग देयर ग्रॉस रिसीट इन रनिंग इनटू crores of rupees, उन्होंने खुश होके मुझे आज 50,000 रुपए का मोबाइल फोन दिया ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सनल रिलेशन. He is covered by 1 crore or 50 lakh. He is giving that mobile phone to me only due to personal relation. Whether he is required to make TDS? अब साहब, पहला तो मुद्दा ये 28(4) में मुझे टैक्सेबल होगा. दूसरा मुद्दा, वो मेरा स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी बड़ी इनकम कमा रहा है, रिसीट कमा रहा है, क्या वो खर्चा अलावेबल देने वाला है कि ये खर्चा मेरा अलावेबल एक्सपेंडिचर? I afraid to distinguish whether it is given by him in the personal course to me or in the business course to me would be a quite difficult. To draw a thin line would be too complicated, friends. And in that particular case, my humble opinion is if he is claiming the expenditure allowable, then he should be requested to claim, rather to make 194R. तू ले बेटे खर्चे allowable और मेरे 26 years में आने दे इसको, so that I have to pay the tax on the same. अच्छा, दूसरा सर्कुलर में लिखा है कि इनकम whether taxable under 28(4) or 41(1) or not, TDS is required to be made compulsorily. Trade creditors write-off करो, whether the TDS is required to be made under 194R or not. Friends,
I'll clarify. मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया. मेरा इश्यू वही है कि मैंने मान लीजिए कि रॉ मटेरियल परचेज किया एंड मैंने परचेज करते वक्त अकाउंटिंग एंट्री पास की, परचेज अकाउंट डेबिट, रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट डेबिट टू माय क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट. नाउ these creditors are no more to be paid the money. They are not to be paid. उनको कुछ पे करने की मुझे जरूरत नहीं है. तो I am writing them off. I am writing them off by passing the accounting entry, creditor account debit to P&L account credit, and this amount is going to be taxable to be under 41(1). The question is, ये 41(1) में टैक्स तो हुआ, but क्या is it called benefit or perquisite? Looking at the bare verbatim of the circular, question number 1, it is. But what about if I have made the TDS on purchase under already 194Q? तो क्या? मैंने परचेज किया तब ऑलरेडी 194Q किया हुआ था. अब मैं जब राइट ऑफ कर रहा हूं तब तो ये मेरी इनकम है. क्या वो मेरा टीडीएस करने आएगा? वो ट्रेसेबल नहीं है, इसलिए तो मैं राइट ऑफ कर रहा हूं. Who is going to make my TDS, sir? Can anyone explain who is going to make the TDS? Friends, I'm very clear that in my humble opinion, it would be too debatable and it would be too difficult for the TDS. And to conclude, friends, as of today, before I take you to this, many pharmaceutical companies or many mutual fund companies or many electrical item companies are giving this freebies, like they are organizing big conferences. If they are organizing big conferences, I'll divide it into two in nutshell. If it is for all, no TDS. If it is for achieving the target, TDS. If it is for all and family members are accompanying, for family member there is TDS. After conference for all, if there is additional 2-day leisure by the doctor or the agent, which is borne by the company, by the pharmaceutical company or electrical company, TDS is required to be made. Number 2, मैं देखा है काफी फार्मा कंपनी है ना फ्रेंड्स, अपने ऐसे जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, लेट अस अज्यूम, या डॉक्टर्स होते हैं, उनको या उनके रिलेटिव को तो चेक से ही पेमेंट करते हैं और डॉक्टर भी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ले लेते हैं. Let us be practical, as it is a small gathering and it is our own association and our own members. Whether TDS is required to be paid? I have definitely the answer yes. अच्छा, गोल्ड कॉइन दे, whether the TDS is required to be paid? अब ऐसा बताओगे कि मैंने 8 गोल्ड कॉइन परचेज किए थे, एक इनको दिया, एक इनको दिया, एक इनको दिया. It is too difficult to say. And if it is shown, TDS is required to be made. तीसरा, काफी फार्मा कंपनी को मैंने देखा है कि वो कैश या चेक देने की जगह बैंक में जाके कार्ड निकलवाते हैं. जैसा नहीं वो सोडेक्सो आता है एम्प्लॉय के लिए, वैसा कार्ड. आप जाओ, आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड है, डॉक्टर को दे दिया, वो डॉक्टर जाए ना, वो जहां पे भी जाए वहां पे यूज कर पाए. अच्छा, खुद को नहीं यूज करना है ना, किसी फ्रेंड को दिया तो वो भी यूज कर पाए. अच्छा, तीसरा, कहीं पे ऐसा आता नहीं है डॉक्टर का नाम इसके ऊपर. कार्ड दिया, कार्ड में सीवीवी है, एनओटी, अब वो उनका पिन कोड है, दैट्स इट. अब फार्मा कंपनी बताती ही नहीं है किसको दिया. Whether they are supposed to make the TDS, you don't know to whom you are going to give. Are you supposed to maintain the list? In my humble opinion, now pharma company has to maintain the list, otherwise there would be a problem. अब ऐसे भी प्रॉब्लम तो अलाउंस में 37(1) में अमेंडमेंट लाके ला ही दिया है. If I highlight, they are very clear कि अगर किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन की गाइडलाइन या काउंसिल की गाइडलाइन परमिट नहीं करती ऐसे खर्चे और आप पे करो, तो expenditure is going to be disallowed under explanation to section 37(1). But assume it is given, whether TDS is required to be made. I have my reservation, unless otherwise you maintain the record, it would be too difficult for you to make the TDS. And friends, if we check out in nutshell, any benefit or perquisite to employee, no TDS. Personal gift out of
Natural love and affection, if my student is giving me today, not claiming it as deductible with a TDS, no. Waiver of trading liability, circular says yes, but I have my own reservation. Providing rent-free accommodation or office promise by one company to another group company, yes. Providing branding accessories to dealer or traders for promotion, which is not returnable, or social media influencer, which is not returnable, TDS, yes. If it is returnable, no. Subsidy, no. ESOP, no. Why ESOP, no? Because it is going to be taxed under the head salary or thereafter capital gain. Granting accessories by firm to partner, which is not returnable to firm, no. And friends, granting stock appreciation right to consultant, I am afraid they have said yes. To close, this circular has been issued by CBDT under the powers conferred to them under 194(2). A combined reading of 194(2) and 3 suggests that the circular shall be binding on income tax authority as well as on the person providing this benefit or perquisite. वैसे भी TDS तो किसको करना है? Person providing this benefit or perquisite. Friends, here the circular is not for the person receiving the benefit or perquisite. It is not for the person who is receiving the benefit or perquisite. 194R payer को करना है, तो payer के लिए circular है, not for the person who is receiving this benefit or perquisite. And friends, I'm clear that this circular is issued for removing difficulty and to enlarge the scope of 194R. Friends, here, whether the circular is removing the difficulty or circular is enlarging the scope of 194R, the answer is yes, it is enlarging the scope of 194R. But whether it is removing the difficulty or not is a big question mark. Friends, I very well remember that last year on 30th June 2021, Chartered Accountant Association Ahmedabad has organized the webinar on 194Q. Same time almost. This is 4 से 6 या 4:30 से 6 का. And I was every time telling the chairman of the direct tax committee कि भाई देखना कोई CBDT का circular आया. एक circular तो already आ गया था. I was telling कि अभी बहुत difficulty है, देखना कोई नया circular आया. मैं पूछता रहता था, कोई circular नहीं आया. And we concluded the meeting. vote of thanks हो गया. मैं ऑफिस का काम स्टार्ट किया and CBDT came out with circular number 13, if I'm not mistaken, dated 30th June 2021, for removing the difficulty under 194Q. Still, we have many difficulty under 194Q. This is the first circular of 194R. जैसा मैंने कहा वैसे there needs number of clarifications under 194R. In that particular case, friends, whether the government will come out with some new circular or not is a question mark. And if they come out with the new circular, the only humble request from our side, our fraternity, is at least consult the stakeholders. After consulting the stakeholders, if you are coming out with the circular, it will be for the benefit of the stakeholders as well as for the benefit of the persons to whom this particular section is applicable. Friends, these are simply the opinion of mine, which is from the bare reading of 28.4 or 194R, and it is from the bare reading of, friends, here CBDT circular as well as some materials which I have referred. I am very thankful to the committee, CA Association Ahmedabad, as well as all the senior and participants to listen me patiently and giving me this opportunity. Over to you, Ustav Bhai, for the question answer if you wish to. Yeah, Pooja Ben is asking that can we have the PPT? Yes, I'll share it with Ustav Bhai immediately after this particular session, and definitely it would be shared with the members. What of this? एक question है मैं बोल दूं? Yes, Palak sir, you may. It is. So I think we can open the house for any. Yeah.
No problem at all. We can do that. We can do that. Also, yes. So participants, if you have any questions, you may please raise your hand. We shall unmute you, or you may post your questions in the chat box. I think there are no questions, Palak sir. Two possibilities. If there is no question, I see the first possibility that just like CBDT, I am also unable to clarify what this circular says. So I have two questions. Okay. If you in case of a pharmaceutical company wherein free samples are given to the medical representatives, right? True. So I've read the circular, but still my question is that they will have, so the company will have to deduct tax on that particular sample, right? But then the question is, if at all that sample is considered as income of the doctor, because what does doctor do? Doctor will usually give that particular medicine to his patients, or very true. But it is not his income. So how fair it is to say that this is an income and you will tax it. Similarly, in case of this FMCG companies wherein there are certain freebies which are given, not to the wholesaler and the distributors, but to the consumers, right? How do we tackle with those situations? I'll answer both. First, if the samples are given to the doctor, unfortunately, our circular makes it clear that TDS is required to be made. I would definitely appreciate that this is not the income. Definitely, it is not the taxable income in the hands of the, I would say, doctor, because he's going to give it to the patient. Yes. Either he's going to charge additional amount from the patient, which is going to be taxable to him, or he's going to charge for that particular medicine, which is again going to be taxable to him. Company making the TDS, how far it is acceptable would be a question mark. But as I have said at the end, that the circular would be binding on CBDT, or rather the income tax authority, plus the giver. There is going to be number of litigation if the receiver does not show this as his income, in spite there is 194R, and is not ready to pay the tax on the same. This is one. And second, Usoba, you were talking about FMCG giving freebies to the customer. Circular itself makes it clear that if it is the same product, buy 2 get 1 free, or buy 10 get 2 free, then there is no requirement of any TDS. Two, three questions there, and Ketan Bhai has some questions. Ketan Bhai has raised the hand. I am just Palak Bhai. Yes, sir. The question is, the company is into the business of market research. Right, sir. Normally, as per the market research company, the terms of contract, they are not supposed to disclose the identity of the interviewer. Very true. And the market research company, in order to get the better reviews, they are giving some kinds of freebies or the cashback as well for each research. Like how to tackle that? Like if we deduct TDS, then their identity will be proved. Would be disclosed. Yes. Ketan Bhai, no answer aapko Ketan Bhai ka answer do usse pehle. If we put it this way, that if they want to do the business and they don't want to make the TDS, as they don't want to disclose the identity. Number one, can they give the money without making the TDS, or can they give the perks benefit without making the TDS under 194R? Answer, in my humble opinion, is yes. If they want to follow the
policy of the company and don't want to disclose the identity, they can make the give the freebies or benefit without making the TDS. What are the consequences if the TDS is not made? Whether 40IA, that is 30% disallowance, would be applicable? 150% yes, 40IA would be applicable, as it is not excluded from the purview of 40IA. But my next question, Ketan bhai, here would be, can department take a stand in the case of the provider कि यार आप आइडेंटिटी बताओ तो ही हम आपको खर्चा डिडक्टिबल देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे? ये तो ऑब्वियसली पहले भी आ सकता था, बिफोर 194R and after 194R. So if some officer in this faceless assessment is so rigid saying that you tell me to whom it is given and we would like to cross verify, and if you are not able to disclose, then I am afraid there are all the chances of facing the disallowances. Yes, Okay. you were saying something. As per the terms of contract, when the government is requiring some of the information, there is always an exclusion clause on that we can disclose that. So you can 100, so then 30% disallowance. If you are able to plead your case before the faceless authority, then 40IA would definitely be applicable. Okay, no 30% disallowance. Till now, no relaxation. Yes, sir. Okay. And one more thing from my side. Yes, sir. If I'm not claiming that as an expenditure, putting it as a depreciable asset, like mobile, if I'm giving you as a free gift and I am capitalizing that, I have issue over there. If you are giving the mobile to me, say for example, I am your dealer, you are the manufacturer, or you are a pharma company and I am the doctor. My simple question for claiming the depreciation as an income tax officer would be, one of the conditions of claiming the depreciation is it is being used for business and profession purpose. That condition is not said to have been fulfilled. So if at all, very rare chances, and it is pure academic I am speaking, that if you are able to prove that I have bought a mobile phone and given it to, say for example, doctor, you are a pharma company, and you are claiming depreciation, it should not be allowed as deduction. But if you capitalize in your books of accounts, no one is going to check कि ये मोबाइल आपके पास पड़ा है या ये मोबाइल किसी और के पास पड़ा है. If it is one or two mobile, it would do. But मान लीजिए कि मेरी एक फार्मा कंपनी ने 100 डॉक्टर को 100 iPhone 13 गिफ्ट किए, then in that particular case the question is going to come. But that also amounts to misstatement on the financial statement. वो मोबाइल फोन है, 100%. उनको ऑर्डर्स देने के लिए दिया है, so that they can use mobile phone for giving the orders, or some pre-installed application will be there on that mobile. I have some reservations from my side. If you are able to plead your case, then it is fine. If you are not making TDS and saying that we are using it for our own business and profession, otherwise I have my own reservation, Ketan. And what is the case if we give free access to our mobile application? I don't think so that there would be any TDS. No problem at all. Okay, thank you. Thank you, sir. There's Pooja Thakkar who has a question. I'll just unmute her. Good evening. Pooja, you may ask your question. Yeah, thank you so much. Sir, so there's this my company. My only confusion was that what they do is, if they are new parent, once they join the company that I am in, and they become the new parent, the company gives them a gift hamper of 4,500 rupees. Now that is that includes everything with regard to the requirement of babies. So I was in a dilemma whether, because that the nature of the transaction is such that it will fall under Perquisite and other company benefits. It's a staff welfare benefits in one case. But do I need to deduct tax under which section here? From the vendor, or what do I do? Or under section 192B? So that's where I was a little confused. So, Pooja, if I'm not mistaken, your question is that it is the benefit you are giving to your
employee, right? Yeah. Right. Then 194R would not come. Do not worry. 194R is very clear that benefit or perquisite arising in the course of carrying on business or profession. Right. So your TDS, if at all is coming into play, it would be under section 192. But there also, if I take you up to 5,000, if you are giving the gift hamper to your employee, it is tax exempt. So there also you don't have to make TDS. So do not worry at all. Okay. Because this more, if the limit crosses 5,000, more than 5,000, then If it is will be taxable, 5,500, right? then 5,500 would be covered under 192. Okay. R will not Thank you come. very much. Your company has set a very nice policy of giving the hamper of 4,500 in place of 5,500, so that there should not be any TDS. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Yeah, one more question from Jaimin. I'll just unmute him. Jaimin, you may ask your question. I think there are no more questions. There is one question in the chat box asked by Jaimin. Hello, we have say 4 A, B, X, and Y group of companies. Our employees put traveling vouchers as per sales inquiry done in respective company, but they are employees of X company. We need to deduct TDS in 194R if voucher in A or B and not in X. I think he's talking about the recharge between two companies, wherein the holding company is bearing all the expenses. Yeah. So, sir, if you can please throw some light on this. Yeah, at 194R will be coming into play. The voucher has to be in the name of the company which is bearing or rather making the payment. As I have highlighted in our case, if say for example, X company employees are traveling, the payment is made by Y company and the bill is also in the name of Y company, no worries. But if bill is in the name of X company, I afraid 194R definitely would be attracted. So there are no more questions. So I would now request Jay Sharma to give a vote of thanks to Palak sir. Okay, thank you, sir. Very good evening to all of you. On behalf of Chartered Accountant Association Ahmedabad, I am very glad to be here to express hearty vote of thanks to our today's learned and respected speaker, Sri C.A. Palak Pavagadi sir, for sparing his valuable time for this meeting on auspicious day of Guru Purnima and sharing his thought-provoking views in a very lucid manner on a recent development in income tax law, that is vis-a-vis TDS on benefit and perquisites under section 194R, and along with a circular issued circular issued 1 minute. Circular issued under in pursuant to the section 194R. So Palak sir, we all member present over here. I think there is some connectivity issue at Jay's end. So Palak sir, thank you very much for this particular lecture. There was a lot of learning which came across. Thank you very much. Thank you very much for your time. Thank you very much for spending time for us. And thank you for attending. Always there for the Mother Association. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you.